Good morning students, how are you all? I hope that you all are fine and staying safe. Students, I am your reasoning teacher Prachi and I welcome you all to the online class from Wisdom School. So let us begin with today's class students. So we were doing the chapter patterns, okay? And in the last class students, we have learnt about patterns in numbers and alphabets, right? So in today's class, we will do some examples of patterns in figures. Okay. So here are few examples you can see on the board, and this is the first example we will take. Okay. So here I have written some patterns here. I have drawn these patterns here on the board. So children, you can see that this is the triangle, right? This is the triangle and this is the reverse triangle, right? This is the opposite triangle. Like you can see, the pointed end is here and this is the downside of form. Okay, like you can see, this is the proper triangle shape and this is the reverse triangle shape, right? And here you can again see that same pattern is written here. The triangle is written, then again the reverse triangle is written, right? So next, by observing this pattern, children, you can see that first of all a triangle is given and then a reverse triangle is given and again a triangle is given and then a reverse triangle is given. So next, what will come here, children? How can we identify? Tell me. Yes, so by observing these patterns, we can find out that first the triangle will come and then the reverse triangle will come. Okay, so this is the first example, and by observing these patterns, we can complete our values and we can find our pattern. Okay, in the next example, children, here I have taken the arrows. So this is the left side arrow, this is the upside arrow, this is the right side arrow and this is the downside arrow. Okay, now we have to find out what will come next. Okay, so first of all, children, we will observe this pattern, these arrows, these given arrows. So children, what you can see here is that these arrows are going in clockwise direction, in the direction of the clock's right direction. Like you can see that clock's hand moves this way, first left side, then this, then this, then this and again this. So clock's hand moves in this direction and this is the clockwise direction. Okay, so we will move these symbols in the clockwise direction. So first, children, you can see here left side arrow will come. If we will move like this, if we will move in this direction, see that left arrow will come first, then upside arrow will come, then after upside arrow you can see right side arrow is coming, right? We are going like this, right? We are going like this in the clockwise direction. So first बच्चों यहाँ पे लेफ्ट साइड एरो आएगा, देन अपसाइड एरो आएगा, यहाँ पे आप बच्चों देख सकते हो, देन अगेन राइट साइड एरो आएगा एंड डाउन साइड एरो आएगा, देन एंड आफ्टर डाउन साइड एरो बच्चों नेक्स्ट कौन सा एरो आ रहा है? क्लॉक के हैंड को अगर हम देखें बच्चों तो नेक्स्ट एरो आएगा लेफ्ट साइड एरो, राइट? अब लेफ्ट साइड एरो के बाद बच्चों नेक्स्ट कौन सा एरो आएगा यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? अपसाइड एरो, राइट? सो वी आर मूविंग इन द clockwise direction of our clock, right? When you will see your clock, when you will observe your clock,
then you will see that the hand of the clock will always move in the clockwise direction. Okay, so this is the example of pattern, and here we are using the concept of clockwise direction for arrows. Okay, so this is the final answer. Okay, so now another example we will take. Here students, in the boxes I have mentioned few lines. Okay, so we have to find out the fourth box. First, in the first box I have written one line, then in the second box there are two lines here, right? In the third box you can see three lines are there. Two are the bold lines and one is dotted line. Okay, so नेक्स्ट बच्चों इस फोर्थ बॉक्स में अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे क्या आएगा. ये फर्स्ट बॉक्स है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम फर्स्ट बॉक्स को देखेंगे. यहाँ पे बच्चों हमने सिर्फ एक बोल्ड लाइन, राइट, एक डार्क लाइन हमने यहाँ पे लिखी है फर्स्ट बॉक्स में. देन सेकंड बॉक्स में बच्चों क्या पैटर्न है, सेम इस बोल्ड लाइन के ऊपर बच्चों हमने एक और लाइन ड्रॉ करी है, राइट. देन इन थर्ड बॉक्स बच्चों आप क्या देख पा रहे हो, दैट इन टू लाइंस के ऊपर हमने जो फर्स्ट लाइन ड्रॉ की थी उस लाइन पे हमने एक डॉटेड लाइन बनाई है, राइट. एंड फोर्थ बॉक्स में बच्चों हम सिमिलर ये पैटर्न पहले बनाएंगे. देखो बच्चों यहाँ पे भी हमने थर्ड वाले में सेम पहले ये पैटर्न बनाया है, देन हमने इस स्लांटिंग लाइन पे डॉटेड लाइन ऐड की है, राइट. अब नेक्स्ट में बच्चों हम अगेन फोर्थ बॉक्स के लिए पहले ये क्रॉस बनाएंगे, देन ये सेम पहले हम बच्चों यहाँ पे ड्रॉ करेंगे दिस, राइट. अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे क्या ऐड करना है बच्चों, ये डॉटेड लाइन यहाँ पे ऐड होगी, राइट. सो इन फोर्थ बॉक्स बच्चों व्हाट विल कम हियर, दिस डॉटेड लाइन ऑन अनदर लाइन, राइट. सो दिस इज द पैटर्न. तो बच्चों एक बार फिर से हम इस पैटर्न को देखेंगे. यहाँ पे बच्चों हमने हर स्टेप में वन लाइन ऐड की है. ओके, जैसे कि बच्चों ये एक बोल्ड लाइन है, इसमें एक लाइन और ऐड की है हमने. देन थर्ड बॉक्स में वी हैव एडेड दिस डॉटेड लाइन, एंड इन द फोर्थ बॉक्स वी हैव एडेड वन मोर डॉटेड लाइन. ओके, सो दिस इज द फाइनल पैटर्न. ओके, सो बच्चों प्लीज go through these patterns once again and we will learn few more in the next class. So thank you for watching.